Number second is outstanding expenses. Number third, prepaid expenses. Next, accrued income. Then income received in advance, depreciation, bad debts, provision for doubtful debt, and provision for discount on debtor. Now we are going to apply the adjustment and at the time of preparation of financial statement. Now question number 2 of adjustment. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. Now prepare a trading and profit and loss account and the balance sheet as on 31st March 2024 after considering the following adjustment. Sorry. Now the adjustment number first. The value of goods on hand at the end of the year was rupees 20,000. This is the closing stock. Now the first adjustment of closing stock क्या करते हैं बेटा, shown in credit side in trading account and the asset side in balance sheet. Now the second is depreciate machinery at the rate 5% and car at the rate, sorry, machinery at the rate 5% and car at the rate, sorry, machinery 10 and car 5. Now this is the adjustment of depreciation. क्या करेंगे बेटे, subtract the amount of depreciation from the fixed assets and from the particular asset in the balance sheet, and the second adjustment on the depreciation and debit side in profit and loss account. Clear? Now first go to the adjustment number 5th, then 3rd, then 4th. Further bad debts. Add in bad debts in the profit and loss account. First treatment or second is subtract from debtor in the balance sheet. Adjustment number 3rd, provision for doubtful debt to be maintained and 5% on debtor. Now the first adjustment is add in bad debts and subtract from debtor. And the last is create provision for doubtful debt at the rate 5% on debtor. तो क्या करेंगे बेटा, provision for doubtful debt separate showing in debit side and profit and loss account, and क्या करेंगे, subtract from debtor in the balance sheet. Clear bhai? These are the 5 adjustments in the question. Now read one by one item. So opening stock, trading account, purchase and sales, trading account, return, trading account, debtor and creditor, assets, goodwill, assets in balance sheet, bills receivable and bills payable beta under the balance sheet, bills receivable asset side and bills payable liability side. Machinery balance sheet jayega, drawing subtract from capital in the balance sheet, car balance sheet, provision for doubtful debt. This is the old provision for doubtful debt is given. तो क्या करेंगे बेटे, subtract from the bad debts. Cash balance, balance sheet, land balance sheet, fire insurance premium, profit and loss account, bad debts, profit and loss account, carries on sale, profit and loss account, carries on purchase, trading account, establishment expenditure, trading account, furniture, assets, balance sheet, custom duty, trading account, donation, profit and loss account, loan, balance sheet, interest on loan. This is the debit side is given. That means this is the expenditure, profit and loss account. And last one is capital is given. So capital is the liability we will shown under the balance sheet. Clear beta? Now we will prepare, first we will prepare trading account. Clear bhai? Pick the item from the trial balance and put the figure in the trading account. तो बेटे फर्स्ट हमारा आइटम ट्रेडिंग में क्या आता है, टू ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज माइनस परचेज रिटर्न. यहां पे क्या आएगा बेटा, बाय सेल्स एंड सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न and by closing stock. Just pick the figure one by one. Now check opening stock is 16,000. Purchase is 2,12,000 and sales is 3,15,000. Opening stock 16,000. Purchase 2,12,000. Sales 3,15,000. Now the next item is return. If the return given in debit side, that means this is the sales return, or if the return given in the credit side, that means this is the purchase return. So with the sales return 3,000 and purchase return is 1,800.
sales return 3,000 and purchase return is 1,800. Clear? Now this is 3,12,000 and 2,12,000 minus 1,800. This is 2,10,200. यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? Direct expenses. Direct expenses means which are directly relatable to the purchase of goods or the expenditure. जो बेटे परचेज करने तक के हमने जो एक्सपेंडिचर इनकर होंगे, these are the direct expenditure. Carries inward, freight inward, custom duty, octroi duty, power, fuel, gas, custom duty, wages, and all are direct expenses. Now check in the trial balance. एक हमने क्या चेक किया था बेटा यहाँ पर डायरेक्ट में? Carries on purchase 2,350 and the custom duty 2,100. This is 2,350 and custom duty. The next is custom duty. This is 2,100. I think no other item is given related to trading. Now check one more time. Only 2 items is given. Clear? Now calculate the gross profit or gross loss. अच्छा बेटा closing stock रह गया. Closing stock adjustment number first. The value of closing stock at the end of the year was rupees 20,000. So closing stock is rupees 20,000. By closing stock 20,000. First calculate the gross profit, then we will calculate the net profit. Chalo. Three lakh 12,000 plus 20,000. This is 3,32,000. Subtract all the item which is given in debit side. 16,000 minus 2,10,200. 2,350 minus 2,100. So the remaining is the gross profit. Now the gross profit is 1,01,350. Gross profit कहाँ आएगा बेटा? In the credit side in profit and loss account. So by gross profit, this is 1,01,350. 2. Now हम लोग लिखेंगे other expenses. Now let us check the item one by one. If you have the question, then you can click the picture of question. First expenses is fire insurance premium 2,400 and bad debt is 1,200. Fire insurance premium 2,400 and bad debts is 1,200. Fire insurance premium 2,400. And bad debts is 1,200. Clear? Now the adjustment regarding bad debts is given in the question. Clear?
Now check the adjustment number 6, adjustment number 5th last adjustment. Further bad debts are rupees 1400. So what are the treatment of bad debts? क्या करते हैं बेटा हम लोग? Add in bad debts. और क्या करते हैं? And subtract from debtor. How much adjustment is given? Further bad debts. Further bad debts is 1400 rupees is given. So first adjustment is add in bad debts. And second is subtract from debtor. Now, so we have to prepare the balance sheet. Now prepare balance sheet. क्या लिखते हैं heading? Balance sheet as on balance sheet as on 31st March 2024. Just need to write down the debtor after 6-7 line because this is just only for presentation point of view. And abhi in the upper side, we will show fixed assets and the lower side, we will show क्या करेंगे बेटा? Current assets. So debtor है, closing stock है, cash in hand, cash at bank, we will show and abhi lower side. And the fixed asset, land, building, plant, machinery, fixed furnitures, we will show in the upper side. So मैंने यहाँ लिखा बेटा debtor. Now check how much debtor is given. So debtor is rupees 81,000. Debtor 81,000. So debtor is 81,000. So what is the treatment of bad debts? Add in bad debts in the profit and loss account and subtract from debtor in the balance sheet. Now 81,000 minus 1400, so remaining is 79,600. Now at adjustment number 3rd, provision for doubtful debt at the rate 5%. This is the adjustment number 3rd. Provision for doubtful debt at the rate 5%. Now, but first we have to calculate the amount of provision of doubtful debt. Then how to calculate the amount of provision? Now we will subtract from the debtor. This is provision for D/D मैंने लिखा यहाँ पर. This means doubtful debt. This is the adjustment number 3rd, provision for doubtful debt at the rate 5%. So what the 5% on? 5% on the remaining amount, 5% not on rupees 81,000, because after subtraction of further bad debts, now the debtor amount is 79,600. Now we have to make the provision 5% on 79,600. तो बेटे हमने क्या निकाला? 5% on 79,600. This is 3980. Is this clear for all? Yes, is this sir. Clear? Yes, sir. Now beta 79,600 minus 3980. 75,620 is the now remaining amount of debtor. हाँ बेटा सेकंड एडजस्टमेंट हमारा क्या है? इसको ऐड क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे कहां पर बेटा? Add in bad debts in the profit and loss account. This is for doubtful debt. This is 3960. This is 6760. Now we have done adjustment number 3rd and adjustment number 5. Now check better. Suppose if the provision for doubtful debt
This means if the old provision given in the trial balance, तो क्या करेंगे बेटे? We will subtract from the bad debts. माइनस कर देंगे बेटा ओल्ड प्रोविजन क्या माइनस करेंगे? ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रुपीज 1200. 1200 ही है ना? 1200. This is the presentation of old provision minus 1200, and the remaining amount we will show in the main column or in the amount column in the profit and loss account. Now with the next adjustment number 4. Create provision for discount on debtor at the rate 5%. Now the first adjustment is first calculate the provision for amount of debtor and subtract from the debtor. क्या करेंगे? Provision for discount on debtor at the rate 5%. And with a 5% on 5% किसका? 75,620. 75,620 का 5%. This is 3781. $71,839 is the amount of debtor. And 3781 कहाँ लिखेंगे बेटा? हम separately show करेंगे in the profit and loss account to provision for discount on debtor. Three, 7, 8. फर्स्ट एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लेते हैं. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या ट्रीटमेंट है? फर्स्ट हम कहाँ लिखते हैं बेटा? हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट साइड, एंड सेकंड कहाँ लिखेंगे? असेट साइड इन बैलेंस शीट. यहाँ लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक. Now adjustment number first, adjustment number 3, 4 and 5th we have done. Now one adjustment हमारा क्या बचा बेटा? Depreciate machinery at the rate 10% and car at the rate 5%. Clear? अभी करते हैं. Now pick the one by one item है ना भाई, और कहाँ लिखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट में. बेटा ये हमने कर लिया, ये हो गया, ये हो गया. डेटर हो क्या लिखा बेटा? क्रेडिटर 16,100. क्रेडिटर कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में बेटा क्या क्या कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले कैसे लिखा जाता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंड माइनस ड्रॉइंग. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बेटे हम लोग क्रेडिटर्स. This is 16,100. Now check beta. Next item is okay. Goodwill 17,000. Asset side in balance sheet. Goodwill 17,000. Next is the bills receivable 8,000 and bills payable 3,900. So bills payable is the liability and bills payable is the assets. Bills payable is the creditors and bills receivable is the debtor. Clear beta? Now beta एक कितना है? 8,000 and 3,900. यहाँ लिख दो बेटा बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल.
Bills receivable is 8,000. And bills payable is 1,300. चलिए यहां तक हो गया बेटा, यहाँ हो गया. नाउ मशीनरी इज रुपीज 70,000. मशीनरी रुपीज 70,000 और बेटे कार है 2,30,000. ठीक है, चलो मशीनरी 70 एंड कार 230. यहाँ लिखते हैं बेटा मशीनरी. Now beta adjustment regarding machinery is given. Adjustment number second is depreciate machinery at the rate 10%. तो हमने क्या लिखा बेटे depreciation at the rate 10% and 10% on 70,000. So amount of depreciation is rupees 7,000 and the remaining amount of machinery is rupees 63,000. Is this clear for all? Just calculate the percentage on the amount of assets. So machinery value is 70,000 and 10% rate is given in the adjustment. So now 10% on 70,000 तो कितना हो गया 7,000 और remaining is the value of machinery. क्या कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? अभी बेटा इसका एडजस्टमेंट एक और करते हैं. No, sir. चलो कर देते हैं साथ में. डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा भाई? डेप्रिसिएशन बेटे आएगा in debit side in profit and loss account. So depreciation on machine. $7,000 और सेकंड क्या है ऑन कार. चलो अभी कार का देखते हैं बेटे. The value of car 2,30,000 in given in the trial balance and depreciation on car at the rate 5% is given in the question. So बेटे 5% on 230 कितना आ गया भाई 11,500. And remaining is 2,18,500. So depreciation on car is 11,500. Now the total depreciation is 18,500. That is this clear for all? Yes, sir. ठीक है बेटा, हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया है ना. We have done all the adjustment number first, second, 3, 4th and 5th. Clear? Now just remaining amount transfer in the balance sheet and profit and loss account. That's it. Clear बेटा? ड्राइंग क्या करते हैं बेटा? माइनस करते हैं. कहां से? कैपिटल से. ड्राइंग माइनस करेंगे 48,000. अभी पढ़ते हैं बेटा. ठीक है, ड्राइंग का कहां से आएगा? ड्राइंग 48,000 माइनस कर दिया. Next sound item is drawing done, car done, ये हो गया. Cash balance 6,700 and lend 2,13,000. लैंड बेटे यहाँ आएगा अपर साइड में, फिक्स असेट्स है इसलिए. और कैश बैलेंस कहाँ जाएगा हमारा? करंट असेट साइड में 6,700. यहां तक हो गया बेटा. Now the fire insurance premium is expenses 2,400. अच्छा लिख दिया हम लोगों ने, लिख दिया. डन. नेक्स्ट bad debts done. Carries on sales 1,350. Next beta, carries on purchase done. Establishment expenditure. Okay, establishment expenditure, there is a slightly confusion in different type of book.
कुछ लोग बेटे इसको ट्रेडिंग अकाउंट मानते हैं, कुछ लोग उसको पीएनएल मानते हैं। हम यहाँ भी लिखें तब भी कोई गलत नहीं करता, कोई इसमें इशू नहीं है। यहाँ लिख दे different type of opinion regarding establishment expenditure is given. फर्नीचर 11,000 कहाँ लिखेंगे बेटा? फिक्स असेट्स की साइड में, नॉट करंट असेट साइड में। फर्नीचर 11,000। नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी बेटे कर लिया था ना हमने, हो गया था हमारा कस्टम ड्यूटी। दिस नाउ डोनेशन 3,100 एंड लोन 3 लाख। टू डोनेशन 3,100 लोन मीन्स लायबिलिटी कहाँ आएगा बेटा? लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट 3 लाख। ये हो गया बेटा charity done and loan done. Now interest on loan debit side is given, that means this is the expenses. Interest on loan is the expenses. And the last item is capital is rupees 2,95,000. So capital कहाँ डालते हैं हम लोग? Liability side and balance sheet 2,95,000. Clear बेटा? Now calculate the amount of net profit and net profit transferred in the balance sheet and just make the total of asset side and liability side. So total must be equal. If the total is equal, that means हमारा बेटा आंसर क्या है? ठीक है। Now बेटा credit side total is 1,01,350. Clear? Now बेटा total of debit side subtract from कहाँ किससे करेंगे? 1,01,350. इन सबको बेटा माइनस कर देना है। बेटा हमने माइनस किया, हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है टू नेट प्रॉफिट, दिस इज 61,859. टोटल इज 1,01,350. ये कहाँ लिखेंगे बेटा? हम लोग ऐड करेंगे 61,859, ठीक है बेटे, प्लस 295 minus 48. So remaining amount is 30,8859. आप लोग बेटा टोटल कर लेना बैलेंस शीट का, ठीक है ना? टोटल हमारा यहाँ जाके मैच हो जाएगा, ठीक है? आई एम नॉट स्पेंडिंग द टाइम फॉर जस्ट ओनली इट, है ना? मेक द टोटल. इज दिस क्लियर? दिस इज द प्रोसीजर आफ्टर एडजस्टमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल एडजस्टमेंट. कोई किसी कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? एनी डाउट? No, sir. चलिए now but 2-3 more adjustment. So many type of adjustment now we can, or so many type of adjustment is possible. फिर भी मैं कुछ एक आपको कराता हूँ. The important adjustment is now the next adjustment is goods withdrawn by proprietor for personal use.
आप लोग बेटा एडजस्टमेंट, आप लोग एंट्री पढ़ चुके हैं, ये उसी का जैसे एंट्री का एडजस्टमेंट है. गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज. You know what is the entry of goods withdrawn by proprietor for personal use? Do you know the journal entry of this statement? कौन बताएगा भाई? हाँ भाई, सुजीत कुमार झा. Purchase account debit to drawings account. The drawing account Sorry. debit to purchase. Drawings to purchase. Yeah. Sorry. Drawings to purchase. Drawing account debit to purchase, because you are going to, or you have withdrawn the goods from the purchase. है ना भाई? बेटे क्या होता है? Just example, you are running a grocery shop, है ना भाई? And you need suppose some grocery for the personal purpose. Then आप क्या करेंगे? You just withdrawn the grocery for the personal purpose. और बेटा ग्रोसरी को ले अपने घर ले जाएंगे, तो क्या हुआ? परचेज आपका कम हो गया और ड्रॉइंग हमारा बढ़ गया, तो एंट्री क्या बनेगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज. क्लियर? If the beta same entry, same adjustment given under the adjustment or given outside that trial balance, तो क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट क्या करेंगे बेटे? Subtract from purchase in the trading account. और क्या करेंगे बेटा? ऐड कर देंगे, ऐड इन ड्रॉइंग. कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट में. Now the next adjustment is goods given as free samples. Goods given as free sample. बेटा इसकी जनरल एंट्री हमारी क्या होती है? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट. हमारी एंट्री क्या? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस. एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा? सबट्रैक्ट फ्रॉम परचेज इन ट्रेडिंग अकाउंट. और क्या करेंगे बेटा? shown in the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्या करेंगे बेटा? इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज goods given as charity. तो बेटा डोनेशन और चैरिटी अकाउंट डेबिट. and to purchase. First treatment is subtract from purchase in trading account. और दूसरा एडजस्टमेंट क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? shown in the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. किस साइड है बेटे? डेबिट साइड. ये भी यहाँ पर कहाँ आएगा? एडवर्टीजमेंट डेबिट साइड. यहाँ लिखेंगे विद द नेम ऑफ एडवर्टीजमेंट, बट यहाँ क्या लिखेंगे? विद द नेम ऑफ डोनेशन, विद द नेम ऑफ चैरिटी. क्लियर है बेटा तीनों एडजस्टमेंट?
Next adjustment is interest on capital. Interest on capital. Whenever proprietor or partner contribute the money in the business, sometime बेटे क्या होता है in the agreement between the partners and the company and sole proprietor in the company or sole proprietor in the firm, ये होता है बेटा कि हम कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे, मतलब पार्टनर और प्रोप्राइटर है ना, भी क्या करेगा, क्लेम द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो दिस इज द एक्सपेंडिचर फॉर द कंपनी. तो क्या करेंगे बेटा हम लोग, कहां करें, क्या लिखेंगे, shown in the debit side in the profit and loss account with the name of interest on capital. This is the beta first adjustment. और क्या कर देंगे बेटा, add in capital in the balance sheet. क्या करेंगे बेटा, कैपिटल में इस अमाउंट को हम लोग ऐड कर देंगे. ठीक है जी. ऐसे बेटा कभी कभी होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. सपोज बेटा इन द एग्रीमेंट ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वंस यू विड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम द पर्सनल यूज देन प्रोप्राइटर और पार्टनर हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अगर ऐसा लिखा हुआ है कि आपको जो आप ड्राइंग लेंगे उसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सो दिस इज द इनकम फॉर द कंपनी. तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, क्या करेंगे, shown in the credit sheet in the profit and loss account with the name of क्या भी, interest on drawing. और बेटा इसका दूसरा एडजस्टमेंट क्या होता है, हम लोग इसको कैपिटल से बेटा माइनस कर देते हैं. एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कैपिटल, कहां पर, इन द बैलेंस शीट. नंबर बेटा आप लोग लिख लेना कितना नंबर कर लिया हम लोगों ने. Now the next adjustment is managerial commission. Next adjustment is managerial commission. What is the managerial commission? Anybody know the managerial commission? What is managerial commission? Anybody know regarding the managerial commission? पता है बेटा किसी को? Sometime manager receive the salary as well as commission.
on profit. If the manager received the commission along with the salary, so this is the managerial commission. And manager charge the commission on the profit. Just example, where a question likha hai, manager received the profit 5% before commission. That means kya hua? First, we have to calculate the profit and charge commission on such profit. तो इसको हम बोलते हैं बेटे क्या? मैनेजरियल कमीशन. Now, regarding the managerial commission, two type of statement है ना भाई, may be there. Number first adjustment, मतलब बेटे दो तरह से दिया हो सकता है मैनेजरियल कमीशन. Number first, as a percentage of profit before charging such commission. बेटे एक तो क्या दिया होता है? But before charging such commission. And the second option is after charging such commission. पहले बेटा बिफोर की बात करते हैं, इसको बाद में करते हैं. If the word before is given, क्या वर्ड गिवन है बेटा? बिफोर इज गिवन. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट. Suppose बेटे ये सेम क्वेश्चन इज गिवन. इन दिस क्वेश्चन सपोज बेटे यहां पर ही एडजस्टमेंट दिया होता, एडजस्टमेंट नंबर 6 इन द सेम क्वेश्चन. बेटे यहां पे लिखा होता मैनेजरियल कमीशन एट द रेट 5% ऑन प्रॉफिट. साथ में क्या लिखा होता? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. वर्ड क्या होता बेटा? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. क्या वर्ड होता? बिफोर. तो हम क्या करते बेटा? पहले बेटे हम लोग ये प्रॉफिट निकालते. हाउ मच प्रॉफिट? 61,859. नाउ वी विल क्या करेंगे बेटा? ये जो नेट प्रॉफिट है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. नंबर फर्स्ट इज द एग्जैक्ट प्रॉफिट और नंबर सेकंड इज द मैनेजरियल कमीशन. वी विल डिवाइड दिस प्रॉफिट, इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. तो वी विल divide the net profit before charging such commission into two parts. Number first is the net profit or remaining is the commission. How to calculate बेटे? ये अमाउंट है हमारा 61,859. क्या लिखा मैंने बेटा फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन कितना है बेटा हमारा? 61,859 इनटू रेट ऑफ कमीशन. बस बेटा क्या करेंगे? इंटू 5 और डिवाइड बाय कितना बेटे? 100. इंटू 5 डिवाइड बाय कितना बेटे? 100. इज दिस क्लियर? ये कितना हो गया बेटे हमारा? 61,859 इंटू 5%. तो बेटे हमारा कमीशन कितना हो गया? कमीशन हमारा हो गया 3093 और 61,000. बेटे फिर हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा? दिस इज 58,766.
मैंने क्या किया बेटा, इसमें से इसको माइनस कर दिया। मैंने क्या किया, यहाँ पर 61859 को ये माइनस कर दिया। सो दिस इज रिमेनिंग। माय क्वेश्चन इज बेटा, if the before bird is given, then first calculate the profit. Just example, in the above question, the net profit is 61,500 and apply the formula, multiply by rate of commission. That's it. Now we can find out the net profit or remaining amount is net. Sorry, we can find out the commission or remaining amount is net profit. Suppose दूसरा केस अगर बेटे ऐसा लिखा हो, as a percentage of profit, अब क्या लिखा हो बेटे यहाँ पर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्या लिखा हो बेटा, आफ्टर, ऊपर क्या था, बिफोर। क्या लगेगा बेटे फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट, सिंपल लिख दो यहाँ पर, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। क्या लगेगा बेटे फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। बेटे हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 81,859। रेट कितना दिया है क्वेश्चन में, 5 डिवाइड बाय कितना, 100 प्लस 5। If the before is given, then simply calculate the profit. और if after is given, then क्या करेंगे बेटा हम, net profit multiply by rate and divide by 100 plus rate. Is this clear? बेटा क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. Clear. नेक्स्ट क्लास में बेटा इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। नाउ बेटा नेक्स्ट, नाउ बेटे टू टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। क्लियर बेटा? नंबर फर्स्ट इज द ओपन एडजस्टमेंट, और नंबर सेकंड इज द हिडन एडजस्टमेंट। नंबर फर्स्ट इज द ओपन। जितने बेटे अभी तक हमने एडजस्टमेंट पढ़े है ना भाई, all are the open adjustment. And the hidden adjustment means if the adjustment is not clear, so this is called the hidden adjustment. Just example. Now beta question number 4. आपने करना है like this is just example. This is the homework. I am just है ना भाई briefing the question and just explain the adjustment और आपने बेटा solve करना है yourself. Now beta first adjustment is closing stock. कहाँ था, trading side, credit side in trading account and asset side in balance sheet. Clear? Next adjustment is 1/5. Sorry, the general manager is entitled to a commission 5% net profit after charging such commission. बेटे बढ़ के लिखा है यहाँ पर after. Then first calculate the net profit. फिर क्या करेंगे बेटा 5 and divide by क्या करेंगे 100 plus 5. Clear? Now बेटा rupees 2,000 paid as salary and wages have been included in the sundry debtor. क्या हुआ बेटा, हमने सैलरी एंड वेजेस का डेटर में ऐड कर दिया। रुपीज 2,000 पेड फॉर सैलरी एंड वेजेस, मतलब कंपनी हैव टू पे द अमाउंट ऑफ रुपीज 2,000 फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी
but accountant wrongly included in the debtor. Adjustment is clear for all? Adjustment is clear? Bolo bete, just give the answer. Bete, adjustment is clear or not? You all are there or not? हाँ बेटा, दीपांजलि, सारनाथ, विशाल, सुजीत. The adjustment is clear. Hello, sir. Adjustment is clear. Adjustment number third. Yes, sir, clear. Clear ना? I am just, है ना, we want to just your reply. क्या करेंगे बेटा हम लोग? 2000 कहाँ दिखाएंगे? 2000 डेबिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड क्या करेंगे बेटा? डेटर में से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डेटर रुपीज 2000. क्लियर? नाउ बेटा, इंक्रीज बैड डेट रुपीज 800 एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5%. बेटा अभी आपको मैंने क्वेश्चन किया, क्या करेंगे? एड इन बैड डेट्स. और क्या करेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर. और अगेन क्रिएट द प्रोविजन फॉर डेटर. और क्या करेंगे? एड इन बैड डेट्स. नेक्स्ट बेटा, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड. अब अच्छे से पढ़ना जरा. General expenses includes insurance premium paid up to June 2024 rupees 3000 per annum. This is the hidden adjustment. This is the hello, sir. hidden. Yes. सर ये मेरा बार बार ना होल्ड पर आ रहा है, पता नहीं क्यों. नहीं, हाँ तो ठीक आ रहा देखो है, अभी पता नहीं मैंने आज तो स्क्रीन ठीक. शेयर किया, आप ये देखिए. अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको? अब स्क्रीन अब दिख रहा है, लेकिन ये अपने आप नहीं 4 बार हो चुका है. अच्छा, 4 बार हो चुका है. अच्छा, कई बार बेटा हो सकता है ना मेरी पेन टैबलेट से ब्लिंक करता होगा वो. अब तो दिख रहा है ना? अभी तो दिख रहा है. हाँ, मुझे ना बेटे बता दिया करो तुरंत, जो भी इशू आपको हो ना, है ना, मुझे बता दिया करो आप. ये क्या बोलता है? देखो बेटे, बोल जनरल, रहा था लेकिन ओके, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू जून 2024 फॉर रुपीज 3000 पर एनम. बेटे जस्ट एग्जांपल, हमारे इंश्योरेंस की ड्यू डेट क्या है? हमारी ड्यू डेट है 31st कैसे होगा बेटे? 30 जून होगा, गलत लिखा हुआ है 30 जून. विशाल कभी ऐसा तो नहीं होता ना हर चीज की ड्यू डेट 1 अप्रैल होती है? क्यों विशाल भाई? विशाल, आई एम आस्किंग यू, वेयर इज विशाल? बेटे ऐसा कभी नहीं होता कि हमारी हर चीज की ड्यू डेट 1 अप्रैल को. इन दिस क्वेश्चन हमारी ड्यू डेट क्या है? 30 जून. और उन्होंने बेटे क्या किया? 30 जून 2024 तक का प्रीमियम पे कर दिया. और हमारा बेटे ईयर क्या है? 31 मार्च तक का. 31 मार्च 2024. एंड कंपनी हैव पेड द इंश्योरेंस प्रीमियम for the next 3 months, April, May and June. So beta this is the prepaid insurance premium. ये क्या बेटा? Prepaid insurance premium. Then how much prepaid? 3000 divided by 12 and multiply by 3. But 3000 rupees for the whole year, in which 3 months is the prepaid insurance. तो बेटा कितना आ गया ये? 750 is the prepaid. हम बेटे इनको बोलते हैं hidden adjustment which is not clearly given in the question. So this is called hidden adjustment. Is this clear? ठीक है, next बेटा.
₹600 out of the advertisement expenditure are to be carry forward for next year. ये किसका है बेटा? हमारा नेक्स्ट ईयर का. ये भी हमारा क्या है? दिस इज द प्रीपेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर. बट एट द ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सपेंडिचर और क्या करता है? सेट साइड इन बैलेंस शीट. क्या लिखा है? चार्ज 1/5 ऑफ द सैलरी एंड वेजेस टू ट्रेडिंग अकाउंट. जितना भी बेटा सैलरी एंड वेजेस होगा, जस्ट एग्जांपल सैलरी एंड वेजेस कितना है? 38,000. तो 32 क्या करेंगे हम लोग? 1/5 कहाँ जाएगा ट्रेडिंग में, 4/5 कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. क्लियर? Now the accrued income we have discussed in the last class, adjustment of accrued income, है ना भाई? Anybody know the accrued income? Adjustment number हमारा 1st, 2nd, 3rd, 4th रहा होगा ये. ठीक है, accrued income. ये बेटे क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, मैंने आपको एडजस्टमेंट बता दिया. Now बेटा one more adjustment, hidden adjustment. चेक करें जरा. Loan to Mr. Malik at the rate 12% per annum given on 1st April 2022. कितना है बेटा? 10,000. मतलब loan given by the company to Mr. Malik. मतलब this is the assets. ये loan taken नहीं है, loan given है. हमने बेटा कितना इंटरेस्ट हमने लोन दिया? 10,000 रुपीज का लोन दिया. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम. तो बेटे 10,000 का 12%. So how much total interest? 1200. मतलब बेटा हमको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 1200 रुपीज. 1200 रुपीज इज द इनकम. चेक करो बेटा. इंटरेस्ट ऑन द अबव, how much interest received? Only 900. And how much total interest due during the financial year? 1200. मतलब बेटा क्या हुआ? अभी हमने 300 रुपीज का इनकम हमने क्या किया भाई? इनकम अर्न तो इनकम रिसीव हमने नहीं किया अभी. हमने इनकम अभी अक्रूड है. इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव. क्या करेंगे बेटा? हम लोग ऐड कर देंगे इनकम में. और कहां पे शो करेंगे? असेट साइड इन बैलेंस शीट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हिडन एडजस्टमेंट. इज दिस क्लियर? इन क्वेश्चन नंबर 4 2 हिडन एडजस्टमेंट इज गिवन. वन हमारा क्या है बेटा? इंश्योरेंस प्रीमियम. और हमारा दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन. आपने क्वेश्चन नंबर मुझे एटलीस्ट 4 करके दिखाना है ना भाई? आप बेटे सॉल्व कर लेना. मैंने आपको नंबर अपना दिया हुआ था, है ना भाई? 981112 and 55704. Just better solve the question and send it to me. I will check and revert you. If you face any problem, then you can ask Hanabi any problem on phone after around 4 or 5 o'clock. ठीक है बेटा? हम एक नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, देन हम मूव करेंगे फॉर द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट लेसन. ठीक है? ओके Okay, sir. ठीक बेटा, बाय. ओके बाय.